अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गाइडलाइंस के ऊपर बात की थी। आज हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। क्या आप जानते हैं कि आपके बैंक को भी एक टेस्ट देना होता है? नहीं, ये कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं होता। इसे क्लाइमेट स्ट्रेस टेस्टिंग कहा जाता है। सोचें, अगर 2022 जैसा सैलाब इस साल फिर आ जाए, क्या पाकिस्तान के बैंक सर्वाइव कर सकेंगे? फ्लड्स, हीट वेव्स और ड्राउट्स ये अब सिर्फ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं रही, बल्कि ये अब बैंकिंग रिस्क बन चुकी है। इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्लाइमेट स्ट्रेस टेस्टिंग गाइडलाइंस इशू की हैं, जो कि बैंक्स के लिए एक डिज़ास्टर ड्रिल की तरह है। According to these guidelines, banks now have to test two types of climate risk. First is physical risk, where banks estimate how many loans could turn into bad loans or non-performing loans if floods like 2022 or 2025 happen again. Second is transition risk, meaning if the government imposes a carbon tax, will factories and industries still be able to repay their loans? Now under physical risk, there are 5 different scenarios. Physical risk 1 and physical risk 2 will use actual flood data from 2022 and 2025. Physical risk 4 will look into large corporate borrowers, and physical risk liquidity shock will assess mass deposit withdrawal. Physical risk 3 is more interesting. It is a vulnerability model where every loan gets a risk score based on 2 things. First, how flood prone the district is and how climate sensitive the sector is. Using these 2 factors, banks calculate something called climate vulnerable exposure or CVE. हर सिनेरियो के बाद बैंक कैलकुलेट करता है अपना पोस्ट शॉक कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। अगर कार मिनिमम से नीचे गिर जाए तो इसका मतलब बैंक फाइनेंशियली वीक है। अब बात करते हैं ट्रांजिशन रिस्क की। अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट ने कार्बन टैक्स लगा दिया तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन इंडस्ट्रीज़ पर पड़ेगा जो ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं, जैसे सीमेंट, कोल, एनर्जी और केमिकल्स। क्योंकि कार्बन टैक्स का मतलब है कंपनीज़ को अपनी इमिशंस के हिसाब से एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, और जब एक्सपेंसेस बढ़ेंगी तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगी, और जब प्रॉफिट्स कम होंगी तो बैंक्स का कंसर्न ये है क्या ये कंपनीज अब भी अपना लोन रीपे कर पाएंगी। इसीलिए बैंक्स को कैलकुलेट करना होगा कि किस सेक्टर पर सबसे ज़्यादा प्रेशर आएगा, किन कंपनीज की रिपेमेंट कैपेसिटी वीक हो सकती है और कितने लोन्स फ्यूचर में रिस्की बन सकते हैं। That's why the State Bank of Pakistan has issued the climate stress testing guidelines to help financial institutions prepare for the economic impact of climate change. These guidelines act as an addition to the existing 2020 stress testing framework and set the minimum expectations for how banks should measure climate-related risk. This test is mandatory for all commercial banks, DFIs and microfinance banks. Pakistan's 6 largest banks, HBL, NBP, UBL, MCB, ABL and Bank Al-Falah are going through this process first. Banks submit these stress test results to State Bank of Pakistan. This helps State Bank of Pakistan identify which banks are most vulnerable to climate disasters, whether the entire banking system is overexposed to flood-prone areas, and whether future stress tests need to become even stricter. The first exercise must be completed by end of third quarter of this year, using December 2025 data. After that, it's annual. If you find this video interesting, then share and follow AI Geonavigators.